Hello students. So today's topic is vowel and consonant sounds. It's vowel and consonant sounds. Let's talk about them. So I would also tell you the difference between them. Why sounds? Because you must be thinking that sounds are the different thing and the letters are different thing. जो आप फोर्थ और फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं या थर्ड क्लास में पढ़ते हैं vowel letters होते हैं वो letters are like A, E, I, O, U are the vowel letters and others are the consonant. The rest of them are the consonants letters, but they are the letters. Remember that. Now today we are talking about the sounds. Now sounds are different. Sounds are like when you say a, e, o, u, o, these are the sounds. The sound, the आवाज़ जो आपकी निकलती है उसको हम बोलते हैं साउंड्स. अब साउंड्स में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि वो वॉल है या फिर वो कॉन्सोनेंट्स हैं. तो वॉवल साउंड्स जो होते हैं वो होते हैं स्वर. जितने भी स्वर होते हैं ना आ से अंगा तक वो सारे होते हैं वॉवल साउंड्स. और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो होते हैं ऑल दी व्यंजन साउंड. जो व्यंजन होते हैं ना, लाइक आप छोटा बड़ा में पढ़ते हो का से लेकर ज्ञा तक, वो होते हैं व्यंजन. तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स. और वो साउंड्स होते हैं क्योंकि हिंदी के अक्षरों को ही आप साउंड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉट इन इंग्लिश. और इंग्लिश के लेटर्स भी उन्हीं साउंड से बने हैं. सो स्वर जो होते हैं वो होते हैं वॉवल साउंड्स और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड ऑनेस्ट. HONEST. Now the word honest has H silent. People say H is silent, so वो vowel बन जाता है. It's not like that. Look at the word. Are you saying honest? No. आपके शब्द में हाँ नहीं आ रहा है. आपके शब्द में जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है ओ, क्योंकि vowel sounds दिया हुआ है यहाँ पर, साउंड दिया हुआ है. ऑनेस्ट पढ़ रहे हो आप, ओ आ रहा है, ओ से औरत आ रहा है, ओ. सो वो ऑनेस्ट जो है दैट इज़ वाई इट इज़ द वॉल साउंड्स. वेल दिस इज़ ओनली वन एग्जाम्पल और इसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं इसके. इफ़ यू गो एंड लर्न द डीप देन यू वुड गेट द. I would give you one more basic and simple example. It's like this one. Like you write here apple, elephant. Both are the vowel letters. ठीक है, वॉल लेटर से बने हुए हैं. इसको भी आप बोलोगे एप्पल एंड एलिफेंट इज दी वॉल. अब इसमें साउंड्स कौन सा आ रहा है? POT, पॉट. P इज दी कॉन्सोनेंट, O इज दी वॉवल साउंड, T इज दी consonant sound. It's a sound guys. So pot. Red. जिसमें जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है O साउंड और A साउंड. ओके, तो ये जो है वॉवल साउंड्स आ रहे हैं, दोनों में वॉवल साउंड्स आ रहे हैं, बट जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, फर्स्ट एंड लास्ट. Also the sounds are two types, short and long. Could you see that? So all the words like it has long also and the short also, short sounds. For an example, छोटा वाला आ जो होता है ओ. So we don't say छोटे आ से नारो, बड़े आ से आम. The correct pronunciation of these words is a and a, जिसमें आप उसको अपने मुंह को खोल करके बोलते हो उसको आ. सो ये वाला जो वर्ड है आ, इसमें जो मात्रा है वो खिंच रही है इसकी, तो दैट इज़ अ लॉन्ग साउंड. एंड ओ वहाँ से शुरू होके वहीं पे ख़त्म हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ओ से अनार. सो दैट इज़ दी शॉर्ट साउंड. लाइक दिस वी आइडेंटिफाई शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स. इनके अलग आइकन्स होते हैं इंग्लिश में, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैम, एंड द साउंड्स ऑल्सो हैव अ वेरिएंट ऑफ रूल्स ऑफ इट. You can learn the deep them, and if you request in the comment section I would come up with one more video with that. Otherwise I would be coming up one more amazing video to show you something new and learn something new in English. Also if you want any video related to English or personality development, you can comment in the comment section. I'll definitely bring my best video for you. Alright guys, alright students, so this is the vowel and consonant sounds, and this is all about I wanted to teach you today. Also that is the RAT, red. So R is the consonant, S is the A is this
sound, which is vowel sound, and T is the consonant sound. Now here, why A sound is coming up? Because when two consonants are there and vowel sound is there, vowel sound is always big. It takes all the consonant sounds together and suppress them. So because of that we have this, and it's just a kind of logic, so don't take it as deep. It's just that it has red sound. It's not r sound is coming a lot or t sound is coming a lot. It's a red. Okay, so this is all about today's learning. I hope you learned that, and keep learning, keep enjoying. Please like and subscribe my channel. Thank you.